हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी गीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हियर आई एम विद माय अनदर वीडियो। सो आज मैं ये लुक शेयर करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ आपको कि कैसा करा है मैंने ये मेकअप। तो इफ़ यू वांट टू सी माय मेकअप सो कीप वाचिंग माय वीडियो। सो लेट्स बिगिन गाइस। सो गाइस, फर्स्टली आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी कंसीलर। इट्स अ लाइट कंसीलर फॉर माय eyelid. So guys, I'm blending with this concealer brush. It's a pack 219 concealer brush. मैं इसको अच्छे से इस ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। मैं थोड़ा सा स्पंज से भी कर लूँगी जो भी एक्सेस होगा। So now I'm setting my eyes with yellow powder. It's a makeup studio palette. मैंने अपने आईज को अच्छे से सेट कर लिया है गाइज। सो गाइज, टुडे आई एम यूजिंग द वेट एंड वाइल्ड पैलेट। इट्स अ वर्सेटाइल पैलेट गाइज। ये आई थिंक सब चीज़ों में काम आ जाता है, इसमें सब कुछ है। इट्स छोटू से पैलेट में सब कुछ है। सो फर्स्टली आई एम यूजिंग दिस शेड फॉर माई क्रीज। मैं इसको डायरेक्ट अपनी क्रीज में लगा लूँगी यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी क्रीज अब बिल्कुल हाईलाइट हो रही है। So now I'm taking this shade, this wine color. You can see. So guys, मेरे अच्छे से स्मच हो गया है। कैन सी। अब जो मेरी 1/3 आईलिड बची है, मैं इसमें ये कलर लगाऊंगी। इट्स अ शैम्पेन कलर। अपने फिंगर से ही ले लूँगी थोड़ा सा और मैं अपनी लिड पे लगाऊंगी। सो गाइस, अब मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और मैं सेम कलर ले रही हूँ और एक अच्छे से क्रीज की तरह इस पे लगा लूँगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये आउटर भी थोड़ा लाइट हो गया है, तो यू कैन टेक दैट सेम फ्लैट ब्रश एंड पिक द सेम वाइन कलर। इसको दोबारा से डिपॉजिट करते हैं अपने आउटर वी पे। यू कैन सी। सो मेरा ऑलमोस्ट मेकअप हो गया है अपना आई का। तो मैं अपनी दूसरी आई भी कर आती हूँ अभी। सो गाइज, मैंने अपनी दोनों आई पे सेम मेकअप कर लिया है। सो नाउ आई एम यूजिंग माई आई लाइनर। सो टुडे आई एम यूजिंग द शुगर कॉस्मेटिक का जेट ब्लैक आई लाइनर इन द शेड 01 ब्लैक स्वान। मैंने बिल्कुल पतला सा विंग बनाया है गाइस। मैं अपनी अभी दूसरी आई पे भी लगा कर आती हूँ। सो गाइस, मैंने अपनी दोनों आई पे और कैमरा लाइनर लगा लिया है। सो नाउ आई एम यूजिंग अ वेट वाइप। मैं अपना जो भी फॉल आउट है वो क्लीन कर रही हूँ। So for base, I'm using the N by Base Rock Cream in the shade Frost Rock Cream Pink Topaz. क्यों नहीं है? मैं थोड़ी थोड़ी सी लगाना चाहती हूँ। मैं को फटाफट ब्लेंड कर लूँगी। So after this, I'm using the Glam 21 Oil Free Silk Base Primer. That's it. इसको मैं अपनी फिंगर्स में रख करके अपनी टी जोन पे लगा लूँगी। So now I'm using the Pro Concealer in the shade Pure Beige for my under eye. इसे बेसिकली मैं अपने डार्क सर्कल को कैंसिल आउट करने के लिए लगाती हूँ।
सी एक साइड पे ज़्यादा निकल गया, तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे लगा लूँगी, यहीं से लेके। सो नाउ आई एम यूजिंग अ रियल टेक्निक कंसीलर ब्रश। मैं इसको इससे ब्लेंड करूँगी। So guys, I'm using sponge now इसको और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। So after this, today I'm using the Lakme 925 फाउंडेशन। मैं बस इसका एक पंप ले रही हूँ अपने हाथ पे, दिस मच। मैं इसको थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी अपने इस पर, थोड़ा सा अपने नेक पर। मैं इसको सेम स्पंज की हेल्प से अपने ब्लेंड करूँगी। So at last I'm using the same Swiss Beauty concealer to highlight my high points of face. Keep it on my acne scar. So guys, now I'm using my concealer brush. मैं भी इसको जल्दी से ब्लेंड करके आती हूँ। कई रात मैंने कुछ इस टाइप का टॉप डाला है, तो मैंने ऐसा मेकअप किया है, वाइन विथ शैम्पेन कलर। सो अब मैं इसको के ब्यूटी लूज पाउडर से सेट कर लूँगी विद द सेम स्पंज। तो गाइस मैंने इसको सेट कर लिया है, कैन सी। अब मैं पाउडर ब्रश ले रही हूँ, इसको दोबारा थोड़ा थोड़ा सेट कर रही हूँ। That's it. So I'm using the same contour palette. Actually टूट गया है इसका लिड, ये रहा, can see. So now I'm taking the contour shade. बिल्कुल हल्का हल्का कंटोर कर रही हूँ अपने फेस को। You can see my jawline area. A little bit on my forehead. Sorry. गाइस मैं ब्लश के लिए इन दोनों शेड्स को मिक्स करके लगा लूँगी। थोड़ा सा पिंक और थोड़ा सा कॉरल कलर है ये। That's it. Little bit on my nose. Little bit on my chin. That's it, guys. For highlighter, I'm using the Wet n Wild. Firstly, I'm highlight my inner corner. My brow bone. So for kajal, I'm using the Geet Beauty black kajal for my waterline. मैं बस इसको ऑलमोस्ट आउटर कॉर्नर पे ही लगा रही हूँ, थोड़ा सा मिड तक लेकर आई हूँ। इनर कॉर्नर को मैं ऐसे ही हाईलाइट होने दूंगी। यू कैन सी द ह्यूज चेंज। सो बैक टू द वेट एंड वाइल्ड पैलेट फॉर माई आईब्राउ। आई एम यूजिंग द डार्केस्ट शेड, सो आई एम फिलिंग माई ब्राउज। So at last it's done of my lips, so I'm using the Maybelline New York Super Stay Matte Ink in the shade 245 Seeker.
मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लूँगी अपनी लिप्स पे। गाइस, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शेड। ये बहुत ही लाइक प्यारा न्यूड कलर है जो मुझे बहुत पसंद है। सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग द मेकअप फिक्सर बाय स्विस ब्यूटी विच हैज़ एलोवेरा एंड विटामिन ई। तो मैं अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए स्प्रे कर रही हूँ। सेट, क्योंकि मैंने आज अपनी आई लैशेज़ भी नहीं लगाई हैं, तो मैं अपनी आई लैशेज़ को कॉट करने के लिए आज के कनाडा का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। Can see the change, the beautiful mascara guys, the just beautiful. So here is my final look guys. I hope आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो. So if you like my video, please like, share and subscribe my channel. So okay, bye bye.